धन्यवाद। और अब मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर नमिता माथुर, कोऑर्डिनेटर सुलभ एनविस रिसोर्स पार्टनर से, कि कृपया आएं और अतिथियों के स्वागत सम्मान में कुछ शब्द कहें। Good morning, Honorable Chief Guest, Mrs. Lipika Roy, Deputy Director, Economic Division, Ministry of Environment, Forest and Climatic Change, Government of India. Honorable Mr. Kumar Rajneesh, National Program Coordinator, ENVIS Secretariat, Ministry of Environment, Forest and Climatic Change. Honorable Mr. Rahul Bhatia, Research Assistant, Economic Division, Ministry of Environment, Forest and Climatic Change. Honorable Padma Bhushan Dr. Bildeshwar Pathak, Sulabh Sanitation, Social Reform and Human Rights Movement. Honorable Mr. Kumar Dilip, President, Sulabh International Social Service Organization. All esteemed guests and selected candidates of Green Skill Development Program Certificate Course in Waste Management 2022 batch. A very warm welcome to all of you on behalf of SulabhENVIS Resource Partner in today's inauguration ceremony of GSDP, that is Green Skill Development Program Certificate Course in Waste Management 2022. ENVIS stands for Environmental Information System. This is a Government of India scheme which was initiated by Ministry of Environment, Forest and Climatic Change, Government of India, to establish a network of environment-related data collection centers across India. SulabhENVIS Resource Partner is one of the ENVIS centers which is working on the thematic area of sanitation, hygiene and sewage treatment systems technology since 2003. We are proud that we have been organizing Green Skill Development Program course at our center since 2018, and this is going to be our 5th batch in waste management. Ma'am, we also did a batch on low-cost sanitary napkin production, but it seems that ultimately we were informed by the ministry that it is under the domain of health ministry. So that's how we have been doing waste management only now. We are very grateful to Economic Division, Minister of Environment, Forest and Climatic Change and ENVIS Secretariat for giving us this opportunity again to train younger inquisitive generation about the concept and techniques of waste management, which touches all the 17 Sustainable Development Goals. I am extremely thankful to Dr. Pathak, Mr. Kumar Dilip, and all Sulabh family members who have encouraged and supported us throughout to make SulabhENVIS a significant and valuable endeavor. To begin this 2-month program, I request Dr. Pathak, Mr. Kumar Dilip to honor and welcome our guests. भाई थोड़ा सा आगे करा दो उनको बीच में।
भाई क्या बंदा है यार। बैग नहीं छतरी के पास। भाई सब लोग एक साथ एक और अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय सुश्री दीपिका रॉय जी, डेप्यूटी डायरेक्टर इकोनॉमिक डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह करती हूँ कि आप आइए और आशीर्वचन के कुछ शब्द हमारे बीच में साझा करें। माननीय मिस दीपिका रॉय जी। A very good morning to all of you, and thank you sir, you have been an inspiration to me since ages. आपके काम में जब मैं 12th में थी, sociology था मेरे पास subject, and I would say probably it was your inspiration and blessings. I was also the CBSE topper of sociology, and I have read your book, and it is a dream come true to meet you today. And the aegis of this ministry has bestowed upon me this opportunity. So I just really seek your blessings कि मेरा इस स्कीम के साथ जर्नी एंड लाइफ में भी आगे आपका आशीर्वाद बना रहे कि अच्छे मुकाम पे पहुंचे. And good morning everyone. Sir, Deep ji, Namita ma'am, finally we get to meet over all the telephonic coordinations. I am the newest member of the ENVIS family. I joined this ministry just about 13 months back. I have finished 1 year on this new year here, and this is a scheme that I have actually set my heart to. When as bureaucrats we go into training, we are taught that you need to form a detachment with the work that you are doing. However, I feel that this one scheme that ever since I have joined, I feel that this is something which goes beyond the domain of a government work. This is something which is necessary for the society, for our planet, for all of us as individuals to participate in and to make our planet a better place. So, environmental information system, that is, आपका पर्यावरणिक जानकारी प्रणाली, that is what is the name of our scheme, under which we are doing the green skill development program. However, I personally feel that this part, that green skill development program जो हमारा 17-18 से start हुआ है ENVIS scheme के under, which is aiming to skill the youth. It was initially aimed towards the dropouts or people who could find some vocational field, but what I feel is that probably this is the oldest scheme of the ministry, the ENVIS scheme. It was way back in 1982-83 that the environmental information system came up as a scheme. It was even before the ministry was formed actually. So since then, this has been there. But what I feel is, there is a famous philosopher, Thomas Hobbes, who said that knowledge is power. So in today's world, I feel that just information is not enough. We need to convert that information into knowledge, and then that knowledge will translate as power into the society. So similarly, we all know that environment, sustainability, waste, these are all very philosophical, far-sighted
egalitarian concepts which have been going around since the 18th century. From the Rio summit to this, that, there comes some or the other definition. Now currently the latest Glasgow COP26. But however, I feel that it is not something which is just the domain of the Ministry of Environment or Ministry of Health, Drinking Water Sanitation, or just the government or some other institutions most esteemed Sulabh, whose work it is. This is something which needs to be adapted as a habit, as a lifestyle in each and every individual. So whatever commitment that our government is making all across the country, whether we want to eliminate plastic waste or achieve net zero emissions by 2070, all of it requires a concerted effort from each and every member. It is no longer a top-down approach, that's something that the government decides which will trickle down to the people. That happens in a welfare scheme. Whereas when we talk of things like environment, it should actually be a bottom-up approach, that only when every individual is going to chip in with his efforts, reduce pollution by carpooling, do segregate waste, make an informed choice when we go out into the market, that if something is available which is sustainable, which might be 50 rupees costlier, but it is something which is recyclable, we make those habits as an informed individual, as an informed citizen. No matter what policy comes up, nothing can be fruitful. So I feel that Sulabh as a host institution as well as SulabhENVIS go a long way in promoting that, and our certificate course in waste management is a one small effort towards which we aim to reach out to the youth of India, to all the people, to all of you who would be doing this course. And I feel that especially post the pandemic, it has been not just a structural change in terms of the economy or in terms of the health sector, but it has actually shown us that what all are the things. It is somehow as if nature is calling out to us that these are the changes that humankind needs to make. And I feel that while we are all trying to protect ourselves, everything, we are kind of increasing the biomedical waste. Like these masks, for example, we walk into the street today and we will find 10 masks loitering around which are just used. So I would expect that all of you who would be gaining knowledge as to how we should be going about the waste management practices, whether it is liquid waste, biomedical waste, electronic waste, you would also take up some steps to go back and give it to the society and spread the knowledge further. So that from environmental information, we can go on to environmental knowledge, make environmentally conscious and aware citizens, and by the time we reach 2047, that's 100 years of our independence, we are also independent of bad habits and bad practices as individuals, and we are able to get into the next century of the country's independence as aware, informed, sensitized citizens with way less pollution, waste and other malpractices, and together we can make the planet a sustainable one. So I hope this GSDP program that we have envisaged would help you to achieve whatever personal goals that you have come with, but also this larger goal that is there in practice. So that would be my appeal to you as a fellow citizen, not just as a ministry official, that the learnings that you learn from this should go beyond, and you should try and at least spread it as far as possible. And I would say that you guys are lucky that you have got a wonderful opportunity to do this course here someday. I keep telling Rajneesh that I wish that I got an opportunity to take 25 days off and do one of our GSDPs, so that I can also probably learn something. So I'll try and drop by in one of your lessons maybe if time permits. But wish you all the very best. You are in the most able hands of the nation. You should count your blessings and wish you all a very best. May you have a very safe GSDP as well. There are no further COVID outbreaks and you are all there. And I hope to see you at your valedictory too. All the best to all of you. Thank you so much, madam, for your kind and inspiring word. Hopefully, सारे juries
ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे in their future as well. Now I request Professor Avdesh Sharma ji, Honorary Senior Advisor, Sulabh International Social Service Organization, थोड़ा सा आशीर्वचन के शब्द हम सबसे साझा करें और स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल कुछ मोटिवेट करें प्लीज. मेरे बैग में ना चार्जर भी है, अभी लाता हूँ. Our most respected founder, sir, respected Dilip ji, our guests, and the participants and colleagues from the Sulabh. I'm going to tell you about Sulabh. Sulabh is the imagination of a poet in the making. Sulabh is the story of the sacrifice of one's own dreams and living somebody else's dreams, and then without being aware of when that somebody else's dream became the dream of that person. Dr. Bindeshwar Pathak, at that time only Bindeshwar Pathak, he wanted to be a professor of sociology in the University of Patna. That was the dream of his life. And he wanted to do an MA or MSc in criminology from Sagar University. And when he was on way to Sagar University, at Hajipur railway station, two of his known persons, one related to him, his cousin, and the other a well-wisher of his family, they ran into him while he got down the train to have a cup of tea. And they inquired, "Where are you going?" And he said, "I'm going to Sagar to do an MA in criminology." And they said, "What will you do afterwards? You will be a lecturer and you will get only rupees 400 as salary. Come with us and we will give you a permanent job having 600 rupees as salary." He said, no, I want to do an MA. And they forcibly took out his belongings from the railway compartment and took him to Patna. And then he was taken to the Gandhi Sangrahalaya, which was the office of Gandhi Birth Centenary Celebration Committee of Bihar. And you know, that committee was only for 3 years. How could that committee give him a permanent job? But anyway, they forced him to be there and he stayed there. He got the job of publicity in charge. And then he gave the report, a truthful report on a book. And though the one who had written that book was a person of standing, so he became angry and he said, "Now I won't work here." And then he was transferred to another department, that was Bhangi Mukti Cell. This is all destiny.
he came there, and there he became the Sampark Padadhikari, and he was to go here and there, and he used to tell people about what Gandhi had said, and he used to give them booklets. Nobody was motivated. He came to the committee and told the secretary and others that Gandhi had said, and he quoted that, an ounce of action is more than tons of knowledge. So we must do something. But nobody was in favor of doing something. Remember, Gandhi Birth Centenary Committee was formed all over India, in all the states, at the center. And in all those committees, there was a Bhangi Mukti cell, and someone in charge, a dozen people as members. Nobody in India thought of how to liberate these human scavengers. He, as a sociologist, because even today, he is a student of sociology and contributing much to sociology. Recently, I think about 5-6 years ago, he gave to sociology a branch, sociology of sanitation. In the late 80s, he had contributed another concept that was action sociology. So sociology he hasn't left. Then he said, well, I'll go and live with them. And he went to Betia, Champaran, remember, the same place from where Gandhi had started his Satyagraha movement and his struggle for the independence of India. And he lived with the human scavengers in their colony, ate with them, because they were not convinced that there would come a person who would think of our liberation. So it took him 3 months to convince them. And then they said, okay. So he came back and he told people in the committee that unless we do something for them, they are not going to listen to us. And he thought what to do, what is the way out. He read quite a few books. He did some research, and then he came to the conclusion that unless a model of a toilet is given, nothing could be done. And he himself, remember, a student of sociology, not a scientist, not an engineer, not a technical person, but on the basis of sheer common sense, he developed the model of toilet. What should be its width, what should be its depth, what should be its slope, all these, what should be the height of the foothold, all these he applied his mind, and finally he came out with one. And one of his colleagues, whom he calls his mentor, Rajendra Lal Das, he showed it to him,
and he was so happy. And he took that to the government of Bihar and presented and said, this is how we are going to liberate the scavengers. And the government representative said yes. And at that time, a circular was sent to all the corporations and municipalities. But in the meanwhile, the committee, Gandhi Centenary Celebration Committee, was dissolved. And then the Chief Minister asked his minister, his cabinet colleague, to ask an NGO to cooperate with the government in the liberation of these human scavengers. And that minister knew him because he had seen him working sincerely and seriously, diligently in the committee. And he had also asked him, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये तो बैतरनी है, यहाँ तो वो आते हैं जिनको और कहीं कोई काम नहीं होता है, तुम तो अभी यंग हो. So he asked him to form a committee, and he collected some people and formed a committee, and it was finalized in the office of the Chief Minister. The NGO was formed. From 1970 up to 1980, the name was changed 4 times. And then finally, SulabH, International Social Service Organization, of which Dilipji is the president. So that came there. What did he do in between? He, there have been many people who helped him in this. But more than that, there were people who pulled his legs. And he was so frustrated that earlier he had helped his father in making Ayurvedic medicines. And then he thought of going back there. And he had went to meet an officer for the supply of medicine in Ara, where that officer was on leave, and he read a nameplate, and a bell rang in his mind. This person seems to be known to me, and he entered. And that person raised his head. He said, Pathak ji, aap? Kya hua Sulabh Shauchalay ka? And he narrated. He said, okay, no problem. I will give you money and you convert service latrines here inside the municipality into Sulabh Shauchalay. And he did that. And then the president of the municipality, when he saw he was a Gandhiite, he was very happy, and he gave him 1,000 rupees, asking him to convert 4 more toilets. And then councillor, he said, okay, if you convert my toilet, then many people will follow suit. And that happened. So in Ara, many people started approaching him, and then the nearby town, Buxar, and then there was no stopping. In 1974, the administrator of Patna Municipal Corporation, in his presence, asked the chief engineer, I want a public toilet to be built opposite the Gandhi, south of Gandhi Maidan. And I want to see it tomorrow at 7 o'clock. And that was 3 o'clock in the afternoon. Come there. And they went there
the chief engineer said, no, I can't. And then the administrator asked, Dr. Pathak, can you do it? I said, yes, sir, I can do it. And then he wrote his order at the palm of the chief engineer, asked him to go to the office and bring 20,000 rupees. And the accountant came with 20,000 rupees, took formal order on paper and gave him 20,000 rupees then and there. Can anybody make a public toilet in how many hours? In 15 hours? I don't think anybody in the world can do that. He applied his mind. He knew he can't. But you know, the whole area south of Gandhi Maidan in Patna had become a public lavatory. Evenings, mornings, daytime, whenever you pass through, you will see people, children, women sitting there defecating. So he called on truck drivers, as many of them as could come. And 25 truck drivers came, said, I'll give you more money than is due to you, but bring truck loads of sand from Koilwar. And they all brought. And then he deputed some more people to go around Patna, find out nurseries, and bring flowers, plants, along with the pot. And by 10 o'clock, 10:30, the truck drivers came, and the whole area was covered with sand. And then those flowers were spread all over. Now, nobody could say that it was an open lavatory. And at 1 o'clock, we started digging pits for the public toilet. 7 o'clock, the administrator came. And when he saw the whole area covered with flowers, he was so delighted. He couldn't believe his eyes. And he congratulated him. And he said, fine, you have 15 days time. In 15 days, you build a public toilet. And in 10 days, he made that ready. That was the first public toilet in India. On paper, during British rule, 1870 or 65. 1878, the British had passed that act that will build public toilets, but that remained in paper. And so the first public toilet was built in 1974 in Patna. And you know, people not only from Bihar, from all over started coming to see. They didn't believe that people of Bihar would pay for going to the toilet. And it was unbelievable that on the very first day, 500 people used the toilet, and they all paid 10 paise each. That was the beginning of it. And you know, UNDP, UNICEF, WHO, I mean, the news went to them, they all came to inspect, to examine whether these household toilets and public toilets are functioning properly. And they found it, and they recommended that it can be used not only in India, but in all developing
countries. This model is functional. And then from Bihar to West Bengal to Orissa to Uttar Pradesh and all over India, and then also to Bangladesh and Vietnam, and in many, the model went to more than a dozen countries. This happened. In 1993, he was in Bombay, and there was one Mrs. Usha Mehta. Asked him, was your father also in this? He said, no, he was a doctor, Ayurvedic doctor. So, you have done it all alone? Said, yes. Said, you are saying so, I have to believe, otherwise I can't believe that one person can do so much of work. When? That was in 1993. And public toilets were in the making and still they are in the making. So this is 2022. One person came here and he said, sir, it is not the work of a man, it is the work of divinity. And Sulabh went on. In Patna, in Ara, many of them were liberated and then moved to Delhi and Alwar and Toh. Now, the two cities, two places in Rajasthan are free of human scavengers. They are all liberated. They are all now part of the mainstream of the society. So, what happened? He saw to it that defecation in the open is stopped. He saw to it that public human scavenging is stopped. And he saw to it that untouchability is gone. And these three are gone. Gandhi had dreamt of it. He took up his dreams, he forgot, he sacrificed his own dream and started working on Gandhi's dream. Had he not started, then I think the idea would not have come to our present Prime Minister, Sri Narendra Modi. And Narendra Modi, the year he took over as the Prime Minister of India from the ramparts of the Red Fort, he announced this, the first Prime Minister who spoke of toilets from the Lal Killa. Sulabh is known to everybody in India, but everybody in India doesn't know Bindeshwar Pathak. Why? Because Bindeshwar Pathak sublimated himself in the organization he formed, and now Sulabh is Bindeshwar Pathak. Schopenhauer spoke about a genius. Who is a genius? He said, a genius is the power of leaving one's own interests, wishes, and aims entirely out of sight, of renouncing one's own personality for a time. That is Dr. Bindeshwar Pathak, who renounced his own personality, sublimated his own personality,
schools and vocational training centers for them, started and got the subject sociology of sanitation introduced to more than 20 universities, and now he has not stopped. He says, in the words of Browning, Robert Browning, "Come, grow old along with me, the best is yet to come." Thank you so much, sir, for briefing some of the incidents and work of our founder, Sir Dr. Demolition in a very short time. And now I request our founder, Sir Dr. Demolition to kindly address the gathering and to enlighten us. माननीय मैडम दीपिका रॉय जी, डिप्टी डायरेक्टर इकोनॉमिक डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी मंत्रालय के और हमारे आसपास कलीग जो मंत्रालय में हैं, मिस्टर कुमार रजनीश जो नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं इनविस सेक्रेटरी में। इनविस का फुल फॉर्म तो डॉक्टर माथुर ने बताया आपको, और मिस्टर राहुल भाटिया रिसर्च असिस्टेंट हैं इकोनॉमिक डिवीजन में उसी मंत्रालय के। श्री अर्जुन बाबू, प्रोफेसर अजय शर्मा जी, बीपी सिंह साहब, गंभीर जी, कुमार दिलीप, डॉक्टर माथुर, ठीक है तो बता दिया आपने। हाँ ठीक है। और जितने भी प्रशिक्षण में आए हुए पार्टिसिपेंट्स हैं और कुछ सुलभ के तो दिखाई पड़ रहे हैं, हम दीपिका जी का, कुमार रजनीश का, राहुल भाटिया जी का और आप सबों का डॉक्टर माथुर ने तो स्वागत किया है, हम भी आपका हार्दिक स्वागत और विषय प्रारंभ करने के पहले एक जोक चल रहा है अभी इस देश में कि एक व्यक्ति सुलभ शौचालय का उपयोग करने गया, तो उस आदमी ने वहाँ जो रहता है आदमी, इसको केयर टेकर कहते हैं उनको, उसने 10 रुपया दिया उसको। तो उसने कहा कि सर हमारे पास तो इसका चेंज नहीं है। उसने कहा कि हमारे पास भी चेंज नहीं है तो हम क्या करें। तो केयर टेकर ने कहा कि सर एक उपाय है,
तो भाई क्या उपाय है कि एक बार और हो लीजिए आप। अभी ऐसी चीज है कि फिर तो हो नहीं सकता है ये। तो ये विषय जो है ये पहले तो बड़ा नेग्लेक्टेड था, कोई बात नहीं करता था। शौचालय जो है विषय भी बहुत ही नहीं नाम लेने लायक था, और जो लोग इसमें काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, उनको अछूत कहा जाता था। यदि वो साफ नहीं करते तो लोग बीमार पड़ जाते, मर जाते। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया समाज के लिए कि समाज ने क्या किया, समाज ने क्या दिया, तो उनको कहा तुम अछूत हो। इतना अपमान हो सकता है, ह्यूमिलिएशन हो सकता है, समाज ने उतना दिया उन लोगों को। और वो लोग उन्होंने इस काम को किया, जिसकी चर्चा हम थोड़ी बाद में करेंगे। सबसे पहले तुमको खुशी से बात की है, मैडम डिप्टी डायरेक्टर हैं दीपिका राय जी, यह भी समाजशास्त्री हैं और फर्स्ट क्लास फर्स्ट समाजशास्त्र में मिला। इनको ताली बजा के कुमार रजनीश हमारे कलीग हैं, पूर्व कलीग हैं, अभी तो नहीं है, पहले के कलीग हैं, हमारे साथ काम करते थे यहाँ पर, अभी मंत्रालय में हैं, बड़ी खुशी की बात है। और फिर जो राहुल भाटिया जी हैं, जो मंत्रालय में काम करते विषय पर, उनका भी हम अधिक स्वागत करते हैं। ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस काम को टेकअप किया है, ये बहुत ही बढ़िया अच्छा सरकार की दृष्टि से, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से ये पुण्य का काम है। जो कहते हैं पुण्य, तो पुण्य क्या है? जो दूसरे के लिए, जो भी शर्मा साहब किसी इंग्लिश लेखक की बात कह रहे थे, तो जो दूसरे की सेवा करता है, जो समाज की समस्याओं का निदान निकालता है, तो उसी को पुण्य कहते हैं। अपने लिए जो काम करता है, कमाता खाता है, तो समान जीवन जीता है। और जो पशु पक्षी भी हैं, वो भी अपना खाने पीने का काम कर लेते हैं। अब किसी पशु पक्षी को तो आपने समाज सेवा करते हुए देखा होगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि इस मंत्रालय ने यह सोचा कि यह एनवायरमेंट का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत व्यापक प्रभाव डालने वाला है। और एनवायरमेंट में सैनिटेशन भी है, वाटर भी है, सेलिंग ऑफ ट्रीज भी है, इरोशन ऑफ सॉइल भी है, क्लाइमेट चेंज भी है। तो एनवायरमेंट के बहुत से विषय हैं। हम लोग किस विषय पर काम कर रहे हैं, तो वो सैनिटेशन की चर्चा हम करेंगे। और फिर जब आप क्लास में यहाँ पढ़ेंगे जब, तो समय मिलेगा और मुझे डॉक्टर माथुर बुलाएंगे, तो हम आप लोगों से आके
वो जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें बहुत से विषय है, सैनिटेशन भी है, वाटर भी है, सॉलिड वेस्ट भी है, और जो सेफ वाटर भी है। तो बहुत से विषय हैं, उसकी चर्चा अति संक्षेप के अंत में हम कर देंगे, एक दो लाइन में, लेकिन बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट का, जो सैनिटेशन का जो पार्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये तो इनॉग्रल ये है, मीटिंग है, तो कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें बहुत समय तो सरकारी अधिकारी लोगों का नहीं लेंगे हम, लेकिन थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं आपको कि सैनिटेशन की समस्या जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ, जब से प्रारंभ हो गया, क्योंकि जब आए होंगे धरती पर लोग, तो शौच के लिए कोई शौचालय या कोई घर ये सब तो था ही नहीं। जंगल में रहते थे, तो जंगल में खाते थे, फल मूल खाते होंगे, और शौच जहाँ उनको महसूस होता होगा वहाँ वो अपना कर लेते होंगे। तो उसी समय से ये समस्या प्रारंभ हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब ऑर्गेनाइज्ड लिविंग जो स्टार्ट हुआ, घर बना के जो रहने लगे लोग, उस समय घरों में शौचालय नहीं बनाए गए। और उसमें एक किताब है देवी पुराण, तो उसमें चर्चा है कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए? तो कहा कि जो चीज छोड़िए और जहाँ चीज गिर जाए उसकी दूर जाइए, मिट्टी खोदिए, घास काट डालिए, शौच करिए, और फिर घास पात डाल करके मिट्टी से ढक दीजिए। और छिपने के लिए उस समय छोटे छोटे पेड़ भी थे, झाड़ियाँ भी थी, टीले भी थे, और लोग पोखरा के सब जाते थे अपना शौच करके, फिर घर से सब काम करके आते थे। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कालांतर में कि लोग जो है वो मिट्टी ढकना छोड़ दिया उन्होंने, और बाहर जाने तो लगे, लेकिन मिट्टी खोदो, घास पात डालो, शौच करो, फिर घास पात डाल के मिट्टी ढको, इसको छोड़ दिया उन्होंने। जनसंख्या कम थी उस समय और क्षेत्र बड़ा था, तो उतना उसका इम्पैक्ट भी नहीं था। तो ये दोनों जो खुले रूप में शौच की प्रथा, और फिर उसके बाद जो मुखिया होते थे और जो राजा बादशाह, अब इन लोगों का शौच साफ कैसे हो, इसके लिए जो काम का बंटवारा हुआ उसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो शुल्क कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सभी ये छूट नहीं है। वो दो भाग बांटे हुए हैं, एक को कहते हैं इम्प्योर और एक को कहते हैं अनटचेबल। तो इम्प्योर में है जो और सब जातियाँ जो खेत जोतती हैं, बोझा डालती हैं, मवेशी खिलाते हैं, उनको आप अछूत नहीं कहते हैं, उनको इम्प्योर कहते हैं। तो उनको माथे बोझा डाल देंगे, अनाज उनसे निकलवाएंगे, अनाज लेंगे उनके हाथ से, लेकिन उनका पानी नहीं पिएंगे आप। और जिसमें वो पानी निकाल रहे हैं कुआं से आपके मवेशी के लिए, उस समय आप पानी नहीं भरेंगे पीने के लिए। तो ये सब जो है, ये जो इम्प्योर जातियाँ थी, उनके साथ व्यवहार हुआ। लेकिन एक
क्लास ऑफ पीपुल जो हुए, जो महिला साफ करते थे, उनको अछूत कहा। अब इसमें आप देखेंगे 1961 का सेंसस है, उसमें 3.5 मिलियन 35 लाख स्कैवेंजर्स थे, और उसके बाद उसमें से 8 लाख के लगभग एक्सक्लूसिव पैखाना ही साफ करते थे, और बाकी लोग दूसरा काम करते थे, ड्रेन साफ करने का, नाली साफ करने का, रोड साफ करने का, ये सारे काम करते थे। लेकिन 8 लाख लोग एक्सक्लूसिव ये काम करते थे। आपको आश्चर्य लगेगा कि इसी सेंचुरी में ये समस्या सारे विश्व में थी, ये नहीं कि समस्या सिर्फ भारतवर्ष में थी, सारे विश्व में समस्या थी। और जैसे हमारे यहाँ म्युनिसिपल ढोने के लिए ये अछूत लोग थे, अनछूत पहले के, अब तो अछूत शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ये जानकारी के लिए। तो उनके यहाँ क्या था, तो वो कहते हैं उसको जैकपॉट। जैकपॉट जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे, और रात में क्या करते थे, सुबह में भोरे भोर महिलाएं जो है उस जैकपॉट को लेके और रोड पर फेंक देती, पैखाना फेंक देती थी, जैकपॉट नहीं, तो उसमें जो पैखाना नाइट सॉइल वो फेंक देती थी रोड पर। इसीलिए इंग्लैंड में, फ्रांस में, वहाँ पर जो है रोड पर चलना मुश्किल था। तो इसलिए जो हाई हील्स का आविष्कार हुआ, हाई हील्स पहले दोनों पहनते थे, महिलाएं भी और पुरुष भी, अब महिलाएं पहनती हैं। तो क्योंकि रोड पर चल ही नहीं सकते थे, वो पखाने से लीटर होता था, वो उनके यहाँ भी कोई सिस्टम नहीं था सेफ एंड हाइजीनिक डिस्पोजल का। तो उनके यहाँ यही सिस्टम था, या कभी शिकार करने के लिए जाते थे तो कोई चीज ले गए अपना और उसमें शौच किया, फिर उसको बाहर फेंक दिया। तो ये है कि आप देखेंगे कि 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में, दूसरे देशों में भी समस्या वही थी जो हमारे समस्या थी। तो फिर क्या हुआ कि लंदन में 10,000 लोग प्रति साल कोलेरा से मर जाते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा सरकार से कि जब तक आप मैला जो है इसका सेफ एंड हाइजीनिक डिस्पोजल नहीं करेंगे, आप बेस्ट प्रेजेंट पढ़ने वाले हैं, खाली हम इंट्रोडक्टरी देके छोड़ देंगे, इतना आपका माथा हम भारी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम बचा ही नहीं पाते सकते आदमी को जब तक कि आप सेफ एंड हाइजीनिक डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं करते। तो 1832 में सीवर लगना शुरू हुआ लंदन में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। कंप्लीट कब हुआ? 1857। 1857 में वो काम लंदन में पहली बार सीवर लगा लार्ज स्केल पर। सामंजस्यली जब यहाँ शुरू हुआ तो न्यूयॉर्क में भी शुरू हुआ, तो वहाँ हुआ 1860 में। और आपके देश में जो कलकत्ता, अब वो कोलकाता कहते हैं, तो वहाँ पर लगा कब? 1870। और 1870 में सीवर लगा ये दो समस्याओं का निदान निकालने के लिए कि लोग खुले में शौच न करें और महिला ढोने की प्रथा समाप्त हो। इन दोनों के लिए जब ब्रिटिश ने उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो लंदन में लगा था। लेकिन इसका हम डिटेल में जानना ही चाहते हैं कि जब
क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि इनॉग्रल में है, पहले कहा हमने। तो उसमें जो उसका बनाना चलाना इतना महंगा था, क्या है कि, और जो पानी लगता है उसमें सफाई करने के लिए इनॉर्मस क्वांटिटी है। आप शौच यहाँ करते हैं, आपके पैन से होके, वाटर सेल से होकर के, या ट्रैप से होकर के, नाली से होके वो सीवर लाइन में गया, आप घर के सामने सीवर लगा हुआ है, या वहाँ से स्टार्ट हुआ और 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर उसको बहा के ले जाता है। कहाँ ले जाता है? तो ट्रीटमेंट प्लांट में। तो उतना पानी चाहिए आपके फ्लश से लेके इसको पहुँचाने तक में enormous quantity of water चाहिए। इसीलिए आज़ादी जब मिली आपको 1947 में, तो 25 शहर में सीवर लगे थे, वो पार्शियली लगे थे। और अभी स्थिति ये है कि जो क्लास 1 टाउन है, इसमें एवरेज कहते हैं ना, उसमें एक पर्टिकुलर टाउन की बात नहीं, एवरेज 32% ही ट्रीटमेंट होता है, बाकी सब नदियों में जाता है। और जो क्लास 2 सिटीज है उसमें 8% ही ट्रीटमेंट होता है। और जहाँ बैठे हुए हैं इसमें 69% ट्रीटमेंट होता है दिल्ली में। इनका जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें 69% ट्रीटमेंट होता है, और रेस्ट कहाँ जाता है? रजुमरा जी। ये टेक्नोलॉजी से ये 2 समस्या का निदान है। जो शर्मा साहब कह रहे थे आपको अपने स्पीच में, तो हमने गांधी सेंचुरी समय जो हम विद्या में रहे 3 महीना, वहाँ पे लंबी कथा है, तुम छोड़ देते हैं, तो हमने 2 गड्ढे वाले, इसका 2 फीट कहते हैं, 2 फीट। हाँ दिखाइए, आप दिखाइए हमको, दिखाइए। तो इसमें इकोलॉजिकल कंपोस्ट टॉयलेट 2 फीट 4 प्लस इकोलॉजिकल कंपोस्ट टॉयलेट, तो इसका हमने आविष्कार किया। और आविष्कार करके इसमें एक जो पता नहीं कितना आप लोगों का एजुकेशन है, फिर भी तो उसमें क्या है कि इसको एक वर्ड है पैराडाइम शिफ्ट। तो हमने पैराडाइम शिफ्ट की बात की और ये कहा कि जो अभी सेंट्रलाइज ट्रीटमेंट है इतना कॉस्टली है, क्या बनाना चलाना, इसमें तो इस समस्या का निदान निकलेगा नहीं। तो हमने पैराडाइम शिफ्ट में कहा कि भैया सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज करो। तो हमने जो कंसेप्ट दिया है, जो आविष्कार किया है, वो है डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट सिस्टम हम न दिए होते तो आज न इंडिया फ्री होता, न बांग्लादेश, न वियतनाम, और ग्लोबल एप्लीकेशन इसमें है। मैं अमेरिका में था कई वर्ष पहले, तो जब दिखाया लोगों को है कि इसमें तो खाद बन जाता है और इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस है, पोटाश भी है। तो सबने कहा भाई अमेरिका में लगाइए, हम भी अमेरिका में सब कुछ है भैया, आपको क्या लगाना है? तो बोला कि नहीं, हमारा सीवर जो लगा हुआ है सिर्फ शहरों में, हमारे गांव में तो सिटी टैंक है, ग्राउंड साफ करना पड़ता है हम लोगों को, और आप जो दिखा रहे हैं तो इसमें खाद बन जाता है। कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी है ये। तो कहा कि हम लोगों को ये जो अभी करिए, हमको बताइए इस टेक्नोलॉजी को। अभी कुमार दिलीप जी ने वहाँ करवाया, घाना में करवाया, साउथ अफ्रीका में करवाया, उनको पता नहीं था टेक्नोलॉजी क्या है ये।
तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमने जो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट का दिया उसमें इसका आविष्कार किया और शर्मा साहब ने बहुत सी बात कह दी है। तो इसी के कारण जो है ये जाके दोनों समस्याओं का निदान निकला, महिला ढोने प्रथा का भी और खुले रूप में शौच करने का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसको देखने का है कि इसमें गैस पाइप नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि लोग गलती से, जिनको जानकारी नहीं है, उस सेफ्टी टैंक में देखते हैं कि भाई पाइप लगा हुआ है तो वो लोग भी पाइप लगाते थे। इसमें क्या है कि जो गैस पाइप नहीं रहता है, ताकि जो गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल में। अब थोड़ा बचता यदि है तो क्या होता है कि वो जो इसमें गैस है जो बचता है वो वाटर से को कंटेक्ट रखता है। तो जाड़े के समय में भी ये अच्छा काम करता है। श्रीनगर में 84-85 में ये क्या करते, काफ़ी विंटर, हार्श विंटर हुआ था, तो -14 डिग्री टेम्परेचर, -14 डिग्री टेम्परेचर में भी सुलभ 1000 बना था। तब तक वो काम करते रहा। सीवर जाम हो गया, सेफ्टी टैंक डाउन हो गया, ओनली बिकॉज जो थोड़ा गैस जो बचा हुआ था वो वाटर से कंटेक्ट रखता है। तो इसीलिए एक तरफ क्या हुआ, जो जिस मिनिस्ट्री का नाम है क्लाइमेट चेंज, तो हम 2 फीट लैट्रिन से मीथेन को आकाश में जाने नहीं देते। इससे क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम रोक लेते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक लेते हैं, इसलिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम रोक लेते हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी हमारी है इमरजेंसी डिस्पोजल की, कि जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं और हेल्थ क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्ट्री का नाम है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हम मीथेन को ऊपर जान नहीं देते हैं। 30% मीथेन से पोल्यूशन होता है, जिसमें कि मनुष्य भी है और एनिमल्स भी है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें दूसरा इसमें है कि पानी का जो इस्तेमाल है, यदि 12 मिलीमीटर का यदि वाटर सील है तो पानी लगेगा 1 लीटर। 20 मिलीमीटर का है तब लगेगा 1.5 लीटर। तो 20 mm जो है वहाँ लगाते हैं जहाँ पानी एजुकेट रहता है, लेकिन ये कम पानी जहाँ पर है इस एरिया में तो हम 12 mm का ही लगाते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि पानी का सेविंग, अब 10 लीटर पानी छोड़ते हैं आप प्रति यूज, और 7 अरब लोग दुनिया रहते हैं, तो 7 अरब गुना कर लीजिए 10 से कितना वाटर हुआ, और 7 को गुना कीजिए 1 से तो कितना पानी हुआ। तो 9 जो टाइम्स पानी का सेविंग इसमें इस टेक्नोलॉजी से होता है। तो आप जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? वो यह है कि जो आज का जनरेशन है वो ऐसे चीज का इस्तेमाल कर रहा है जो आगे के जनरेशन को नुकसान नहीं करने वाला है, जो उसका प्रिजर्व कर रहा है कि आगे का जनरेशन जो आने वाला है उसको नुकसान नहीं हो, उसके लिए हम इस पर चर्चा करते हैं, काम करते हैं। तो सुलभ में जितने चीज है इसमें, एक तो हम गैस का बता दिया, पानी का बता दिया, अब 2 गड्ढा है, एक चालू होता है एक बंद रहता है, ये भी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। अच्छा है कि ENVIS ने प्रोग्राम शुरू कर दिया है, अभी कंटिन्यूस शौचालय बन गया है, लेकिन 10 के 10 है, बहुत तो जानकारी भी बहुत चीज की नहीं है इसमें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि 2 वर्ष
से कम के पहले नहीं खोलना चाहिए। 1 वर्ष 3 महीने में डिकम्पोज हो जाता है, बैक्टीरिया सब मर जाता है, और 2 वर्ष हम रखते हैं लेमन के लिए, क्योंकि हर आदमी के पास माइक्रोस्कोप नहीं होता है। वो जाके नहीं देख पाएगा कि इसमें पैथोजन है कि नहीं है, बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो लेमन के रखा गया कि 2 साल के बाद निकालते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है एस्केरिस, वो अंडे के आकार का गोला गोला छोटा छोटा सा होता है, वो मरता ही नहीं। एनारोबिक कंडीशन में, इनएरोबिक कंडीशन में वो मरता ही नहीं। कितना साल में छोड़ दीजिए, आप 2 साल छोड़िए, 4 साल छोड़िए, वो कभी नहीं मरेगा। तो सुझाव ये दिया जाता है कि खाद निकालने के बाद 2-4 दिन एयर में छोड़ दीजिए। आज जैसे ही उसको एरोबिक मतलब ऑक्सीजन मिलेगा मर जाएगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जब तक तो जिंदा रहेगा वो। तो 2 साल तो है, लेकिन 2 साल के बाद निकालने के 2-4 दिन बाद छोड़, इसलिए हम लोग बरसात मना करते हैं। अब यदि ऐसे कोई दूरी पड़ जाए तो आप साफ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ड्राई वेदर्स में उसको साफ करना चाहिए, ताकि उसमें जो एस्केरिस है ना वो मर जाए और बढ़िया से खाए। अब इस सब की जानकारी लोगों को है ही, और हम लोग इतने संकोची हैं कि हम लोग प्रचार प्रसार अपना करते ही नहीं, बहुत कम करते हैं। हम लोग अपनी सीमा में है पैसा, तो हम लोग अपना जो कमाते हैं उसे चलाते हैं, और अनुदान ले हम लोग दान ले तो कुछ हो सकता है। तो खैर कहने मतलब ये है कि इसमें अब खाद मिल गया, तो इसमें नाइट्रोजन है 1.8%, फास्फोरस है 1.6%, और पोटेशियम है। तो थोड़ा सा चूना मिला दीजिए इसमें तो बहुत अच्छा खाद हो जाता है। तो आज जो बात चल रही है केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल न किया जाए, उसको रिप्लेस करने के लिए इससे अच्छा दूसरा खाद हो ही नहीं सकता है। तब जो आप अपने फल फूल खाएंगे, अनाज खाएंगे, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये चीज जो हमने इसका आविष्कार किया है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी बाद में पढ़ेंगे आप, जो बायोगैस की टेक्नोलॉजी निकाली हमने, उसमें भी हम गैस को जला देते हैं। क्या करते हैं जला करके? तो खाना पकाते हैं, बल्ब जलाते हैं, जाले में तापते हैं, बिजली बनाते हैं। पटना में 7 साल हमने बिजली दी बुलडोजर में। प्रभात साहब आपके टाइम से अच्छा नहीं था, तो 7 साल जो है हम लोगों ने बिजली दी बिल रोड में, कोतवाली से लेकर के संजय गांधी उद्यान पार्क तक। तो आप बिजली जला सकते हैं। और जो पानी है, वो पानी का ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं। तो ट्रीटमेंट करके क्या हो जाता है, प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, अब लंबा समय होगा, हम समाप्त करेंगे आपको। तो उसमें क्या है कि वो जो पानी है उसमें जो BOD का बायोकेमिकल डिमांड है, तो वो 10 mg है पर लीटर। तो ये जो है ना, ये पानी एकदम साफ है, इसे हाथ धोइए, शौचालय में जाइए, शौचालय साफ करिए, खेतों में डालिए। इसमें भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस से पोटेशियम है, गुड फर्टिलाइजर। इसको इस्तेमाल कीजिए, पानी मिला के कीजिएगा, सीधे जले पता चल जाएगा। तो पानी मिला के कीजिए उसको। अब ना करना होगा यदि, तो नदियों में छोड़ेंगे इसको, तो नदियों का पानी से ज्यादा पानी साफ है, तो पोल्यूशन नहीं होगा। नहीं, तो
तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो वेस्ट मैनेजमेंट पर बात कर रहे हैं उसमें हमने आज आपको सैनिटेशन वेस्ट की थोड़ी बात करी, सारी बात नहीं बताई आपको हमने। और फिर हम लोग काम कर रहे हैं आपको सॉलिड वेस्ट पर। सॉलिड वेस्ट में काम हम लोग करते हैं तो इसमें है कि बाद में पढ़ेंगे आप कि बेसोफिलिक और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है, उससे हम लोग जो खाने पीने का सामान है, केला है, छिलका है, भोजन है, जो भी है, जो सड़ने वाला पदार्थ है, हम लोग 10 दिन में उसको खाद बना देते हैं। हम लोगों ने जो धर्मशाला है वहाँ पर हम लोगों ने इसको लगाया था, बड़े सब्जी मंडी में लगाया था हम लोगों ने। तो ये चर्चा भी आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, सॉलिड वेस्ट का देखेंगे। जो एनिमल वेस्ट है, तो जो प्लांट लगे, बायोवेस्ट प्लांट इंडिया में मिलियंस लगे और बहुत खराब हो गए, क्योंकि जो फीड है वो फीड मिला नहीं। 8-10 एनिमल होता नहीं किसी के पास में। तो वाटर हाइसिंथ हमने दूसरी टेक्नोलॉजी निकाली है, आविष्कार किया है। वाटर हाइसिंथ को यदि आप पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के और एडिक्वेट मेजर्स में क्वांटिटी में यदि आप डालते हैं प्लांट में, तो एक गाय, एक बछड़ा आपके पास में है और वाटर हाइसिंथ मिला देंगे तो कितना गैस मिलेगा? 8 घंटे से 10 घंटे। तो आपका नाश्ता, पानी, लंच, डिनर सब तैयार हो जाएगा एक गाय एक बछड़ा से वाटर हाइसिंथ मिला दें। हम लोग डकवीड है, उसमें है गांव में मछली पाल सकते हैं और 1-2 लड़का मिलकर काम करे, लड़की मिलकर काम कर सकती है, हम लड़के को नहीं कर रहे हैं, तो इसमें लड़कियां भी काम कर सकती है। तो इसमें है कि 2 से 3 को 5 से 6 लाख रुपए का मछली साल में मिल सकता है। अच्छी आमदनी आपकी है। तो यहाँ है कि स्वच्छता से रोजगार, एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम सैनिटेशन। तो सैनिटेशन में शौचालय, ह्यूमन वेस्ट भी है, वाटर भी है, डकवीड है, वाटर हाइसिंथ भी है, सॉलिड वेस्ट भी है। इस सारे की पढ़ाई पढ़ेंगे आप लोग और अच्छे पढ़िएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रेनिंग दिए थे, एक बार भीड़ जब लूटता, जब हम शताब्दी में काम करते थे, तो वो लोग 3 दिन का, उन्होंने कितना रिक्वेस्ट किया कि ज़्यादा दिन देंगे ना, 3 दिन बहुत है। तो 3 दिन में क्या किया वो लोग, अब सब भीड़ सब था पटना, उस समय जैसे हम दिल्ली आते हैं तो पटना होता है वहाँ के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए। तो पहला दिन आया तो हाजिरी दिया और कहा कि हम जाना चाहते हैं, तो चला गया। सेकेंड डे आया और थोड़ा पढ़ा लिखा और कहा कि और हम लोग तब मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो 1-2 घंटा रहा, थोड़ा बड़ा सुना, उसका चले मार्केटिंग करनी। आज थर्ड डे जब आया, खा पी के आया, कहा कि हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो 3 दिन के अंदर जो ट्रेनिंग दी हम लोगों ने, वो कैसा दिया सब सोच सकते आप लोग। मुझे पटना में दिया गया था 10,000 लोगों का ये टाइपिंग का ट्रेनिंग, शॉर्ट हैंड टाइपिंग का ट्रेनिंग। कितने महीने में? 3 महीने। तो हमने कहा भैया 3 महीने में शॉर्ट हैंड टाइपिंग तो सीख ही सकता है, और वो तो सुलभ का सर्टिफिकेट रहेगा और मशीन चलावेगा, इधर मशीन भागेगा उधर, तो कहेगा कहाँ ट्रेन किया थे सब। तो 3 महीने ट्रेनिंग हुआ है। तो एक ट्रेनिंग में जो खराबी है, और इसके हैंजर्स के ट्रेनिंग के लिए हम लोग कहा गया था, जो हमने किया नहीं भाई, 1 दिन में ट्रेनिंग कैसे होगा भाई। तो वो पुराना था नंबर, कितना नंबर होना चाहिए, नंबर आप पुरानी काम में करता हूँ, नंबर पुराने वाला काम जो है आप करिए।
तो ये है कि आप जब आए हैं तो आपसे आग्रह ये है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए तो बाद में कीजिएगा, पहले अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको अच्छे से लागू कीजिएगा, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और हम लोगों ने, मैडम सोशलॉजिस्ट स्वयं हैं, तो सोशोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की पढ़ाई हो रही है। एक्चुअली सोशोलॉजी की बात बताएंगे आपको, हम उस डिसिप्लिन के आदमी हैं। तो अभी 20 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 है उसमें, तो उसमें पढ़ाई हो रही है ग्रेजुएशन लेवल पर और MA लेवल पर। उसमें क्या है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं कि भैया आपका भविष्य अंधकार में नहीं रहेगा, इतने विषय पढ़ लेंगे आप तो आप जहाँ चाहेंगे, जिनको नौकरी मिल गई वो मिल गई, नहीं मिल गई तो हमारे साथ हो जाएंगे, जो हम अपनी नौकरी खोज में चले थे। देखिए आज 20 से 30 हजार लोग रेगुलर स्लो में काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम तो कितने लोग, लाखों लोग काम किए होंगे यहाँ पर, उनकी फैमिली जोड़ दे तो लाखों हो जाएगा। तो अकेले हम चले थे अपने जॉब के लिए, तो स्कूल टीचर से स्टार्ट किया हमने, पर आज हमने ऐसा कर दिया कि अब लोग यहाँ आते हैं। ये जो आप जहाँ आप आए हैं इसको हम कहते हैं सुलभ संसार। उसकी बात बाद में करेंगे। और अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि गॉड हैड हेल्प यू टू हेल्प समवन। ईश्वर ने आपको सहायता की है दूसरों की सहायता करने के लिए। हमारे लड़के जो है जो पढ़ाए हमने बायोलॉजिकल, तो कुमार दिल्ली हमारे लड़के हैं, लेकिन सोशलॉजिकल हमारे हजारों सन्स एंड डॉटर्स हैं। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुमको एक ही लड़का एक लड़की नहीं है, तुमको तो हजारों लड़का लड़की है। उसमें से 2 को अमेरिका भेजा हमने, हमने भेजा, वो कहा कि जाएंगे तो मैं जाओ। एक लड़का करोड़पति हो चुका है, जो वो बनाता है क्या, वो जो बैटरी कार, वो दिल्ली में जो कार चलती है बैटरी ऑपरेटेड, वो सौरभ का बनाया हुआ है। जब पढ़ता था तो कभी कहे कि 2 लाख दीजिए, फिर 4 लाख दीजिए, क्योंकि तुम करते क्या हो, तो नहीं हमको ये करना है, हमको वो करना है, वो करना, करते करते आज करोड़पति हो गया। ऐसे हमने बहुत से विद्यार्थी पढ़ाया है, उसका लिस्ट हम ध्यान नहीं जा रहा है आपको। एक महिला हमारे यहाँ अभी काम कर रही है, 96 में उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। हमारे यहाँ के 4 IAS अफसर थे, तो फाइल लेके आ गए हमारे पास में कि सर 10 लाख रुपया खर्च पर होगा। तो डॉक्टर कह रहा है कि 10% से ज़्यादा नुकसान बचने का नहीं, तो काहे रुपया खर्च कीजिए आप लोग, ये बचेगी नहीं। अब कोई 10% चांस है ना जी, तो कहा कि हाँ तो ट्राई कीजिए। तो बता में यहाँ दिल्ली में अस्पताल है, उसका ऑपरेशन हुआ, आज सुलभ में वो पटना में काम करती है। तो ये है ना, शादियाँ तो कितनी लड़कियों की कराई हमने, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये है कि पहले तो अपनी रोटी कमाइए, उसके बाद वो सारी रोटियां आपके लिए नहीं है। ईश्वर ने जो जारे आपको 10 मिनट भगवान ने दे दिया, तो 10 मिनट करेंगे क्या भाई, एक से लिखेंगे, एक और रख लीजिए कि टूट जाए तो फिर उसको इंसान करेंगे, एक और रख लीजिए। तो 10 पेन में से 3 पेन तो ठीक है, आप रख लीजिए, इस 7 को लेके क्या करेंगे?
तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है। उड़ीसा के एक आदमी को पत्नी मर गई उसकी, कैसे ह्यूमन लोग होते हैं, और एम्बुलेंस नहीं दिया उसको बेचारे को, और 10 किलोमीटर अपनी बेटी को साथ लेकर के और अपनी पत्नी का लाश को लपेट करके वो भुवनेश्वरपुरी लाया। उसको हमने 5 लाख रुपया दिया कि भाई गरीब आदमी है, चलो इसको ही करना चाहिए, ठीक है। पूर्णिया में एक लड़की की शादी जो है, वो डिटेल नहीं जाएंगे, तो वो कुछ गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, तो हमने भेजा कि जाओ उसको बुला लो, उस आदमी को, हम रुपया 5 लाख देंगे उसको शादी के लिए। तो हम गया तो कोई राजी नहीं हो, बोला कौन आदमी 5 लाख रुपया ऐसे बुला के दे रहा है। अब तो अब पूर्णिया में जो है वो कोई तैयार ना आने के लिए, झूठी बात है ये। ऐसा कौन आदमी बुला के 5 लाख साल के रुपया दे रहा है। तो समझाया कि नाम दिया, डॉक्टर पाठक ने बुलाया, बस अच्छा वो बुलाए हैं, अच्छा ठीक चलते हैं। तो यहाँ आया तो कहा, एक छोटी सी मीटिंग साहब बैठे हैं, मीटिंग हुई, कहा कि सर हम विश्वास नहीं हो रहा था कि धरती पर ऐसे लोग भी हैं कि बिना बुलाए जो है बेटी का सुना कि शादी नहीं हुई तो आप 5 लाख रुपया हमको दे, बुला लिया हमको। तो ये है कि गॉड हैड हेल्प यू टू हेल्प समवन। तो ये इम्पोर्टेंट है। जब हमने टीचर जॉब शुरू किया था, मेरा सैलरी कितना था? 80 रुपया। उसके बाद काम किया तो 5 रुपया, उसके बाद काम किया 200 रुपये महीना। अब 80 मिला, 5 मिला, 200 मिला, तो अभी जहाँ बैठे हैं उससे तो ज्यादा होगा ना कुछ यहाँ पर, इतना तो अंदाजा रहा होगा आप लोगों को। तो ईश्वर जो 80 रुपया से, 5 रुपया से, 200 से यहाँ ला दिया आपको, तो क्या सब आपके लिए है ये? हाँ, मान लीजिए इसका गहरी फिलॉसफी है। अंत में कंक्लूड करते हैं, बात में बताएंगे आपको। आज तक धरती पर जो डेफिनेशन किसी ने नहीं दिया है वो हमने अभी कॉइन किया है। ईश्वर क्या है? तो जो शक्ति है, सूर्य की शक्ति, सूर्य के पावर से ही धरती पे जी पैदा लिया, और उसके बाद जो भी हुआ फिर आदमी पैदा लिया। और इस जीव को बनाए रखने के लिए उसके लिए हवा का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, अग्नि का इंतजाम किया, अन्न का इंतजाम किया, फल का इंतजाम किया, और वनस्पति का इंतजाम किया जो खाने में भी है और दवा के ऊपर काम करता है। तो ये धर्म है। आपने प्रार्थना सुनी, ये प्रार्थना बनाई हमने 96 की, 94 को याद नहीं पड़ रहा है, तो 96 प्रार्थना बनाई। धर्म धर्म सब धर्म एक है, और धर्म ही है आधार, बिना धर्म का आधार कहां से होगा? तो हमने कहा सभी धर्म है, तो ये धर्म है। ये जल जो है, अग्नि है, वायु है, भोजन है, दवा है। लक्ष्मण जी को बाढ़ लगी तो मंगाया गया वहां से संजीवनी बटी। रावण का भी जो, रावण को भी कुछ बाढ़ लगा था तो उसका सुखे में जो था वो बचाया था उसको। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब अब धर्म है, ये सबके लिए बराबर है। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, राष्ट्रीय हो, जो भी हो, वो सबके लिए बराबर है, वो धर्म है। इसलिए का शाश्वत है। शाश्वत मतलब जब से सृष्टि का स्टार्ट हुआ है तब से बराबर है, वो शाश्वत है। वो शास्त्र लोग समझ देता है हिंदू धर्म, वो हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म। सनातन में जब से पृथ्वी का स्टार्ट हुआ तब से सनातन का सोचा है हिंदू धर्म। अरे हिंदू धर्म थोड़े है वो। तो ये हो गया, तो ये ईश्वर हो गया, धर्म हो गया। और संस्कृति, संस्कृति क्या है? जो माँ ने खाना खिलाया वो आपका भोजन। जिस भाषा में माँ ने बात किया
वो आपकी भाषा, और जहाँ का जन्म हुआ आपकी मातृभूमि। तो माने हमारे यहाँ जो लोग आए, हमने कहा हम तो गांधी में डिफरेंस है, हमने अपना दिमाग लगाते हैं। ये थोड़े कि आप कहिए कि मना जो गरीब था तो सामने तालाब है, तो क्या तालाब डूब जाएंगे हम? हमको कह दिया महामना जो गरीब था तो पोखर है सामने में, तो डूब जाए क्या? या तार का पेड़ आ गया रास्ते में, सबसे पर चढ़ जाए क्या हम? ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बुद्धि लगाइए। किताब में जो बातें लिखी है, लोगों ने कहा, हम बोल रहे हैं, ये एक जगह पर है, बट आप अपनी बुद्धि लगाइए। तो संस्कृति क्या है? तो जहाँ जहाँ लोग पैदा लिए, माँ ने जो भाषा सिखाई वही उसका विकास हुआ, उसी में ग्रंथ बना, उससे वेद है, पुराण है, सब है, उसमें कुरान है, उसमें बाइबल है, तो उसी भाषा से विकास हुआ। अब जब क्रॉस कल्चरल हुआ, जब लोग मजबूत लोग हुए, जाकर उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको पकड़ लिया, और उससे क्रॉस कल्चर हुआ, लोग भाषा छूट देते हैं। तो हमने नई परिभाषा दी है, ईश्वर कौन है। हम वैशाली के रहने वाले हैं। भगवान महावीर जी ने कहा ईश्वर नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, वो भी वैशाली में रहे थे साहब। और मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर है। हम आप सब बैठे हैं, तो जिसका ईश्वर निकल जाए बस यहीं पर तो हड़बड़ हो जाएगा। उठा तो शक्ति है, एनर्जी है, तभी तो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ये तो शक्ति है। तो ये शक्ति कहाँ की है? सूर्य। तो हमने मंत्र तैयार किया है, ओम शिवाय नमः, ओम जलाय नमः, ओम अग्निवे नमः, नहीं, ओम खाद्य नमः, ओम बृहस्पति। ये सब धर्म है। ऐसा कैसे होगा? हम यहाँ मुसलमान हैं और हम हैं हिंदू हैं, एक ही भवन रहते हैं, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वो आदमी रोजा नहीं करेगा तो लगेगा तो मर जाएंगे हम, तो अल्लाह हमको श्राप दे देगा। और हम ही बगल में रहते हैं तो हमको अल्लाह श्राप नहीं देगा। अब भाज वर्षा वो लोग सब शिव जी की पूजा नहीं करेगा या भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा तो उभर जाएगा। तो ये है कि वो धर्म है ही नहीं, ये संस्कृति है। वो तो ये जो रामायण है, जो वेद है, ये जो कुरान है, ये जो संस्कृतियां हैं सब, पर लोगों ने धर्म समझ लिया है। धर्म के एलिमेंट है उसमें। दया करना धर्म है, दया करना सबके लिए है, बराबर है। चलिए हम शांत हो रहे हैं, आप लोग को ही बड़ी विस्तार हम बात बोल रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम को एक बार पुनः बहुत ये जीविका राय जी जो है इनको और कुमार जी को, राहुल भाटिया जी को आए, बहुत ही अच्छा लगा। आज तो सर कैंपस देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो समय हो गया है, लेकिन हम जरूर निवेदन करेंगे कि आप जरूर एक बार आइए और कैंपस को ठीक से देखिए कि क्या क्या यहाँ लगा हुआ है और कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसा कैंपस आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। आप इंग्लैंड जाइए, अमेरिका या सब जगह जाइए, सभी का उत्तर है। आप इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है। इसका उत्तर क्या? इसका उत्तर ये है। इसको हमने नाम दिया है सुलभ संसार। और इसी के साथ अभी या तो नहीं आपको, लेकिन बाद में आपको भी हम फॉर्म भेजेंगे, उसमें उसको मेंबर आपको बनाएंगे, उनको ही बनाएंगे सुलभ मित्र संसार। सुलभ मित्र में क्या है कि आपको अपने बेटा से, बेटी से, भाई से, बहन से, पत्नी से, सबसे सब बात आप नहीं बोल सकते। मित्र से बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन होता है? मित्र होता है, जिससे अपने दुख सुख, अच्छी बातें, बुरी बातें सब उससे बात कर सकते हैं। बक्के से नहीं कर सकते। बक्के से करेंगे इसे 90%, किसी 70%, 75% नहीं, 100% बस एक मित्र से बात कर सकते हैं। तो हम लोग के अपना ये है कि सुलभ संसार
गांव में भी, शहर में भी, जहाँ तहाँ बने। और आप घर पर बैठी हुई हैं, आपको इच्छा हुआ कि चलो गपशप करते हैं, तो वहाँ चले गए संसार में, अपना गपशप पिए, कप चाय पिए, चल दिए वहाँ से, ठीक है ना। तो एक बार बड़ा आपको बधाई है, धन्यवाद। और रंजीत जी वहाँ गए तो अच्छा किया कि बढ़िया काम कर रहे हैं, हमको भी खुशी हो रही है कि यहाँ से जुड़ गए। एक हमारे हटको में गए थे लखनऊदार, बाहर गए हुए थे, कहाँ गए हुए। तो ये है कि आप लोग, फिर से निवेदन हमारा है कि आप आए हैं यहाँ पर तो अच्छा से पढ़िएगा, समझ जहाँ भी ना आए आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम सब बताएंगे। और हमको जितना हमारा अध्ययन नहीं है उतना ब्रेन से हम काम करते हैं, है नहीं। तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज जो है ना वो तो आप ट्रांसफर हो सकता है, कमिटमेंट आपको अपना करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात को बढ़ाते नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। Thank you so much, sir, and we are very grateful for your invaluable words and gained with precious knowledge and information. Thanks a lot, sir. And now I request Shri V.P. Singh Ji, Executive Chairman, Sulabh International Social Service Organization, to kindly deliver the vote of thanks, please. A very good morning to everyone here, all the distinguished guests. On behalf of the Sulabh family, it is indeed my honor and my privilege to deliver this vote of thanks. At the outset, I'd like to thank Honorable Founder Sir, Honorable President Kumar Sir, and of course, our special guests. I'd like to thank Miss. हमारे यहाँ जो लोग आते हैं रहते हैं उनको हमने कहा हुआ है कि जब हम बैठे हैं खाने के लिए या चाय पीने के लिए, हमें साथ में बैठे हो तो पहले उनको देना, हमको बाद में देना, जो परंपरा हमारे यहाँ है। तो इसलिए है कि आप उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, पूरे मैडम का, उसका और रजीश का, तीनों का स्वागत करिए, धन्यवाद दीजिए। उसके बाद हम लोग जी sir. Thanks for the advice, sir. My very special thanks to Ms. Deepika Roy, Deputy Director, Rajneesh Kumar, National Program Coordinator, Mr. Rahul Bhatia, Research Assistant, all from Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And I also congratulate Ms. Deepika Roy for her excellence in sociology and education. I would also like to thank Dr. Namita Mathur and Professor Avdesh Sharma for their relentless efforts in conducting, that will go into conducting this training program. And my special thanks to Avdesh ji for providing an insight into early life and struggle of Honorable Sir. That was indeed a story that deserves to be told. It is indeed a saga of despair, hope, struggle, and ultimately triumph. So let us all contribute our bit to spread this story across the world. Then, I'm sorry, I have to thank Sir, as you advised me, Honorable Sir, Honorable President Sir, Kumar Sir, and last but not the least, the trainees. I congratulate them and thank them for choosing this training program,
which is such a vital field of human knowledge, and that will go into making a better tomorrow. So I congratulate them also, and I take this opportunity to once again thank my entire Sulabh team. Entire Sulabh team, thank you so much. And we hope we will continue to do better in future. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। और अब हम कार्यक्रम की समाप्ति पर आ गए हैं। कार्यक्रम की समाप्ति आप कर सकते हैं ना, वो गाना वो जो है भजन होगा ना, रामायण वाला, नारायण वाला, चल फिर ना, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर एडवाइस। यहाँ पे आए सभी ट्रेनीज से हम आग्रह करते हैं कि कृपया एक एक करके आए और थोड़ा ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दें। सो हम शुरुआत करते हैं आपसे, प्लीज़। लाइन लगा लीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग लाइन लगा लीजिए इस साइड से। जो भी स्टूडेंट्स सब हैं, जो भी ट्रेनीज है, ट्रेनी हिंदी भी है, थोड़ा साइड से। हेलो, मेरा नाम राखी है और मेरी क्वालिफिकेशन 12th है और मैं सरस्वती IIT से हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर का कोर्स किया है। सरस्वती IIT से हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर का कोर्स किया है और मैं नजरभर से हूँ। हेलो, मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं कानपुर से आई हूँ और मैंने MSc कंप्लीट किया है विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट। और मैं अपनी फील्ड को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। Good morning, sir, and respected ma'am. My name is Prashant Sharma. I am from HSI Institute, Dwarka. I recently completed my course. मैंने अभी अपना HSI कोर्स करा है, जो इंस्टीट्यूट जिसका द्वारका कोचिंगपुर के अंदर पढ़ता है, उसी सब्जेक्ट के अंदर इस कोर्स से रिलेटेड एक कंटेंट था जिसमें मेरा इंटरेस्ट आया और इसलिए मैंने कोर्स चुना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम निखिल है और मैंने 12th पूरी हो गई और मैं हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर का कोर्स किया हुआ है। मुझे एनवायरमेंट के ऊपर थोड़ा काम करना था, स्पेशल में Good morning everyone. My name is Akash. I live in Delhi. My native place is Allahabad. And I have done my graduation in BTech Environmental Engineering from Delhi Technological University. I am interested in this field, so I contribute to nation and add some value to the society. Thank you so much. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं नांगलोई से आया हूँ और मैं हेल्थ सैनिटरी का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सरस्वती ITI। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज गोशिया, आई लिव इन दिल्ली। मैं खजूरी से आई हूँ और मुझे इसलिए इंटरेस्ट है इसमें। मैं अभी भी मेरा BA कंप्लीट हो चुका है, MA में सोशियोलॉजी से कर रही हूँ और सोशल वर्क के लिए मैंने कुछ आगे प्लान कर रखा है। मैं अपना NGO स्टार्ट करना चाहती हूँ और इसी वजह से मैंने मेडिकल जो कोर्स किया है
उसकी वजह से मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आगे गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम राहुल है और मैंने एमएससी की है एनवायरमेंटल साइंस एमडी रोहतक से। तो वही मैंने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और तभी से इसके बारे में इंटरेस्ट बना, तो मैंने सोचा कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो इसलिए ये कोर्स ज्वाइन किया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम कविता है और मैं छतरपुर से आई हूँ और मुझे इस कोर्स में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं ये कोर्स कर रही हूँ। वो कौन सा नाम है? कविता याद है आपको? नहीं याद है, कोई बात नहीं। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं बीएससी मैथ ऑनर्स से किया हूँ और इसके बारे में मैंने पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देखा, फिर मैंने इसके बारे में कुछ जाना तो मुझे पता चला हर्षवर्धन सर के द्वारा 14 फरवरी 2018 को इसका आरम्भ किया गया। फिर मैंने इसके बारे में कुछ और डिटेल जाना तो ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है कि शिक्षा जो है कि दिया जाता है, तो मैंने सोचा कि ये जो है मुझे करना चाहिए और जैसे पर्यावरण के लिए अपने आसपास में जो साफ सफाई है उसके लिए जो योगदान देना चाहिए और लोगों को मतलब इसके बारे में जिज्ञासा बढ़ाना चाहिए कि जो वो इस काम को अच्छे से करें। Hello everyone, my name is Shivam and I have done my bachelor's in physics honors from University of Delhi, Motilal Nehru College. I just wanted to do this course from a long ago. मतलब पहले ये course था नहीं, but I was really aspiring to do this course. When I was in second year of my physics, so I used to live in Delhi. So उसके बाद जैसे मैं गांव जाता था, घर जाता था, तो वहाँ पे कूड़ा बहुत ही फैला हुआ मिलता था। मतलब स्वच्छता अभियान जब सरकार ने चलाया था तो गांव में सरपंच ने क्या कर रखा था कि वो ट्रैक्टर से हर जगह से कूड़ा कलेक्ट करते थे और एक डंप साइट पर डंप कर देते थे विदाउट एनी प्रॉपर मैनेजमेंट। सो ये मेरे अंदर लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज़ का। सो आई जस्ट मतलब मेरे को होप दिखी इस कोर्स में, सो आई जस्ट जॉइन्ड इट एंड आफ्टर दैट आई विश टू मेक माई विलेज एज इंडिपेंडेंट विलेज बेस्ड, जो खुद से वेस्ट सेग्रीगेट करे और गांधी जी का जो सपना है वो पूरा हो कि हर गांव इंडिपेंडेंट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुण कुमार वझा है। मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हूँ। मैंने इसको पेपर एडवर्टाइजमेंट में ये देखा था तो मैंने ये कोर्स करने का निर्णय लिया। हमको इससे कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए हम इसमें आए। आप लोग भी आ जाओ साइड। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मनोरंजन कुमार झा है और मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की है। तो मैं आया नगर से आया हूँ और पर्यावरण एक समस्या है, इस विषय में मैं काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। मैंने बीए की हुई है, मेरा नाम निशा है और मैंने HSI हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर का कोर्स किया हुआ है और मेरे को इसमें इंटरेस्ट लगा, इसलिए मेरे को ये कोर्स करना है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम आज़ाद हुसैन है। मैंने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया है सरस्वती ITI से। देन उसके रिलेटिव में मुझे इंटरेस्ट आया इस कोर्स में, मैंने थैंक यू।
Good afternoon, respected sir and ma'am. My name is Amit Kumar. I am from Ghaziabad. 12th पास करने के बाद मैंने द्वारका से सरस्वती ITI से मैंने HSI का कोर्स कराया है। मैं अपने कोर्स को रिकंटिन्यू करना चाहता था, इसलिए सर मैंने ये कराया, इसमें सर्टिफिकेट किया। Good morning, sir. Respected sir, good morning, and a very warm good morning to my colleagues and friends. I am Abhishek Raj. I am a civil engineer. I am here to join solid waste management program because of my curiosity about environment. So thank you. सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र से निवास करता हूँ। सन 2006 में मेरा ग्रेजुएशन किया था मैंने कॉमर्स से, और सुलभ परिवार का मेरी तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इस कोर्स के लिए सिलेक्ट किया मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे। और उसके बाद 10 साल का मेरा ग्राफिक डिजाइन का एक्सपीरियंस है। पिछले 6 महीने से मैं खाली हूँ और मेरा काफ़ी मन था कुछ सालों से कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। तो गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये सुलभ समझ में आया और मैंने यहाँ एनरोलमेंट किया और मैं यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा जो शॉर्ट टर्म मतलब प्लान है वो ये है कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री, इस वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को समझ सकूँ, प्रोफेशनली इसमें थोड़े दिन काम कर सकूँ। मेरा जो लॉन्ग टर्म प्लान है, मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में आग से लेकर बहुत समस्याएं हैं, जंगल में जलने वाली आग है, पाइन ट्री की जो लीव्स हैं उनको इकट्ठा करके उनको कैसे वेस्ट हटा के वहाँ से उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या उससे अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं काम करना चाहता हूँ विषय में। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेरे सभी कलीग से है कि क्योंकि मेरा ग्राउंड साइंस का नहीं है, मेरी हेल्प करें प्लीज। थैंक यू सो मच सारे स्टूडेंट्स और ट्रेनीज, और ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग। होप बहुत कुछ आप यहाँ से सीख के जाएंगे, लर्न करके जाएंगे और अपनी आने वाली ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हम कार्यक्रम की समाप्ति पे आ रहे हैं और हम हमारे म्यूज़िक सेशन के साथ ही उसे आग्रह करते हैं कि कृपया हमारी प्रार्थना और उसके बाद नेशनल एंथम से भजन से, उसके बाद नेशनल एंथम से कार्यक्रम को नारायण
तन मन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे धारे तब जयदाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हिंद जय हिंद जय हिंद थैंक यू snacks and